Hello guys, welcome back to my channel. In today's vlog video I'm going to share a productive day in my life, sharing some behind the scenes stories, few personal stuff और इस वीडियो के एंड में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही एक्साइटिंग इजी एंड टेस्टी होममेड घी रेसिपी। सो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। As usual, I start my day with lukewarm lemon water and my masala chai. It's still dark outside. You can see मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे कुछ काम पेंडिंग काम था वो मुझे ख़त्म करना था, जैसे कि ये वीडियो एडिट करना है। It was my last upload. मैंने एक शॉर्ट वीडियो अभी मैंने अपलोड किया है. It's all about hair growth recipe. It's a very helpful hair mask recipe guys. If you miss that you can check in my description box बिलो, मैंने लिंक शेयर कर दिया है, नहीं तो ऊपर आई कार्ड में भी आप क्लिक कर सकते हो। आफ्टर एडिटिंग द वीडियो मैं अभी डिश वॉश करूँगी, विच इज़ द मोस्ट टायरिंग जॉब फॉर मी, बट आई हैव टू डू इट। आई वांट टू फिनिश ऑल द वर्क सो दैट शाम के टाइम में मैं थोड़ा सा फ्री रह सकूँ और इवन के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूँ। So it's 7 a.m. in the morning and now you guys can see our patio garden, which is a new addition in our life. Credit goes to my husband. He does all this patio work. We are planning to extend the garden, so let's see how it goes. Good morning, Ivan. Oh my God, good morning. Good morning. Good morning, Chunchu. इवन टिफ़िन इज़ रेडी। टिफ़िन में आज है पैनकेक एंड फ्रूट्स। मैं टिफ़िन में हमेशा वही चीज़ देने की कोशिश करती हूँ जो इवन हाथ से खा लेता है विदाउट मेस, क्योंकि स्कूल में उसे हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहेगा। So yes, today's tiffin is pancake and fruits, and it's Ivan's breakfast, egg bread toast, which is my kind of version, और इसे ऐसे खाना पसंद भी है एक ब्रेड के साथ। और yes, Ivan is a big time egg lover like Ivan's mommy, तो मॉर्निंग में हमेशा मैं कोशिश करती हूँ एग का कोई प्रिपरेशन देने का। So now we are on the way to school. Today is the last day of Ivan's preschool before summer vacation. So मैं भी जा रही हूँ इसके साथ। यूजुअली दीपांजलि ड्रॉप करता है इवन को, बट एज टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ स्कूल, सो मैं भी इसके साथ जा रही हूँ आज। सो इवान को छोड़ के हम लोग वापस आ गए हैं घर पे अभी। कल से इवान का समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा, सो टुडे इज़ हिज लास्ट डे of his preschool. So now back to the point, the main purpose of doing this vlog video. I'm going to share a few things about my channel. Firstly, guys, have you noticed that I have changed my channel name? So it is not sweta'sBeautyvanity anymore. It is in my name now, Shweta Das. The main purpose of changing this channel name is to make it easy accessible, and it is not that कि I was not happy with the name, but it's a kind of long name. तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि I should change my channel name and keep it short and easy accessible. So now what you need to do is just you need to type my name SWETA Shweta Das on YouTube search bar and my channel will be popped up. और अगर आपको कोई वीडियो देखना है so you can watch it. So that guys, keep that in mind. And secondly, why I was damn inactive on my YouTube channel. मैं ढंग से क्यों यूट्यूब वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ मेरे चैनल पे। So, 4-5 months back we got to know that Ivan has a speech delay issues. When we were in India we noticed that Ivan was not responding, Ivan was not talking. Ivan के एज में Ivan को जितने वर्ड्स बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है। So जब हम लोग वापस आए यहाँ पे यूएसए में, इट वॉज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टू कंसल्ट विथ अ डॉक्टर. सो वी कंसल्टेड Ivan's doctor, Ivan's pediatrician, and after Ivan's evaluation it was confirmed that Ivan has a speech delay problem. So we
started इवान स्पीच थेरेपी एंड इवान का प्री स्कूल भी हम लोग तब स्टार्ट किए थे. एंड I'm telling you guys, this speech therapy thing is so helpful. Along with that, we have been practicing few things at home. One of them is zero screen time. अगर आप मुझे Instagram में follow कर रहे हो तो आपको पता है, I already talked about it. And I can tell you guys, after this speech therapy and the practice we have been doing at home, this helped Ivan a lot. बहुत कुछ चेंज हो गया अभी इवान के बिहेवियर में. इवन इज़ क्वाइट रिस्पॉन्डिंग नाउ. हालांकि हमें और चीज़ें हमें ट्राई करना है अभी टू इम्प्रूव हिज स्पीच एबिलिटी एंड ऑल. सो गाइज यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि मुझे कितना टाइम देना पड़ता है इवान के लिए. एंड इट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी. बीइंग अ मदर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव हिम द बेस्ट प्रैक्टिस एंड बेस्ट थिंग टू हिम. एंड एट द सेम टाइम मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम में भी कंटेंट क्रिएट करना है. अब टू क्रिएट कंटेंट्स ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. स्टिल आई एम फिगरिंग आउट कि मुझे कैसे बैलेंस करना है एंड ऑल. सो दिस इज़ द मेन रीज़न आई वॉज इनएक्टिव. So guys, I'm trying my level best to maintain everything without ignoring Ivan. So guys, now you can expect me at least once in a week on my YouTube or two, 3 times on my Instagram. I'm trying my level best to balance everything without ignoring Ivan. So guys, that is the main reason I was inactive, and thanks all of you guys for all the support and love you have been showing me. So guys, please keep supporting me. What is there? Stop. Let me see. What are you saying? Stop. Oh, stop. It's a traffic signal even. Red stop. Red means stop. Yes. Yellow stop. Yellow, slow down. Green means? Stop. Yes. Go. No. Green means go. Yes, you are right. So guys, let me share the ghee recipe with you all. For that we need to have unsalted butter. यहाँ पे मैंने 450 ग्राम के ये 2 पैकेट लिए हैं, जिससे मुझे 700 से 800 ग्राम करीबन घी मिल जाएगा. और हमें ऐसे वाइट बर्तन चाहिए सो दैट कि बटर इवनली वार्म अप और कुक हो सके. सो पहले बटर को मेल्ट होने देना है, जैसे कि आप देख रहे हो, और पूरे प्रोसेस होंगे बहुत ही धीमे आंच में. द मेन थिंग इन दिस रेसिपी इज़ हैव पेशेंस. आपको ये ध्यान में रखना है कि बटर नीचे से जल ना जाए. आफ्टर 15 to 20 मिनट्स बबल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. धीमे आंच में प्रोसेस को आपको चालू रखना है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है. डोंट नीड टू स्टिर द लिक्विड एट दिस पॉइंट. After 15 minutes, you can see the color started changing. It's more of a reddish brown color, and you can hear a popcorn pop-up kind of sound at this point. And after 15 minutes, जब बिल्कुल liquid reddish brown हो जाएगा and you can get a sweet aroma, at that one you need to turn off the gas. Now let it cool the liquid completely. Then you need to strain the liquid into the jar जहाँ पे आप रखना पसंद करोगे. It's not ready yet. After 24 to 48 hours, it will be look like this. My ghee is ready and it's 1000 times better than store bought ghee. मुझे बहुत ही पसंद है. और USA में घी बहुत महंगा है. So since last 2 years I have been doing this process. मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर पे सबको बहुत पसंद है ये घी रेसिपी और ये घी का टेस्ट. So guys, please try it and let me know कि आपको कैसा लगा. So मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करती हूँ. We'll be back here soon with other videos very soon. Until then, stay happy, stay beautiful, stay safe and stay healthy. Bye bye guys.